हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिनचर्या। आज हम अभ्यंग ऑयल मसाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये श्लोका क्या कहता है, पहले हम देख लेते हैं व्हाट दिस श्लोका टेल्स। वन शुड प्रैक्टिस ऑयल मसाज डेली। हमको अभ्यंग अभ्यंग मीन्स ऑयल मसाज डेली करना चाहिए। वन शुड प्रैक्टिस ऑयल मसाज डेली। इट वार्ड्स ऑफ ओल्ड एज। ये करता क्या है? इट डिस्ट्रॉय ओल्ड एज। ऑयल मसाज डिस्ट्रॉय ओल्ड एज। फिजिकल एग्जर्शन मीन्स थकान को खत्म कर देता है। वात डिसऑर्डर्स, और वात डिसऑर्डर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिस्ट्रॉय वात डिसऑर्डर्स। इट बेस्टोज क्लियरिटी विजन। अभ्यंग से विजन क्लियर हो जाता है। नरिशमेंट ऑफ बॉडी। अभ्यंग कॉजेज नरिशमेंट ऑफ बॉडी। बिकॉज ऑफ अभ्यंग बॉडी गेट नरिश्ड, बॉडी को पोषण मिलता है। लॉन्ग लाइफ, बिकॉज ऑफ अभ्यंग वी गेट लॉन्ग लाइफ। गुड स्लीप, साउंड स्लीप मीन्स गुड स्लीप। हेल्थी स्किन एंड फिजिकल स्टडीनेस, और बॉडी एकदम स्टडी रिजिड हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। इट मस्ट बी डन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हेड, ईयर्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। अभ्यंग मेनली कहाँ करना चाहिए? हेड, ईयर्स एंड सोल्स ऑफ फीट। However, अभ्यंग is strictly contradicted for the dominated by aggravated कफ। अब अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए? जिनमें कफ डोमिनेंट होता है। कफ डोमिनेंट पीपल शुड अवॉइड अभ्यंग। Those who have just undergone प्योरिफैक्टरी डिटॉक्स प्रोसीजर्स, जिन्होंने अभी जस्ट पंचकर्मा किया है, उनको भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। एंड दो सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, और जो भी इंडाइजेशन से सफर कर रहे हैं उनको भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ये सब अवॉइड करना चाहिए उनको। श्लोका। अभ्यंग आचरेत नित्यम। सियर अभ्यंग आचरेत नित्यम। अभ्यंग मीन्स ऑयल मसाज। आचरित means practice. Nitya means daily. Okay. Abhyang oil massage should be practiced daily. Sajara vatah. Sajara vatah. So this abhyang, sa means this abhyang, destroy. Ha means destroy. Which three things he is destroying? Jara means old age. Shram means fatigue. And Vat means Vata dosa. तो अभ्यंग destroy Jara, Shram and Vat. Old age, physical, fatigue and Vat. Abhyang destroy these three things. Drishti Prasad. Drishti Prasad means it clear vision. Drishti means vision. Prasad means clear. Okay. Pushti Ayu. Pushti means nourishment of body. Ayu means long life. Ayu means long life. Suswapna. Suswapna means good sleep. So what Abhyang causes other things? It clear vision. It nourishes body. It causes long life. It causes good sleep. Drishti Prasad, Pushti Ayu, Suswapna, Sutwak. Sutwak means improve skin. Abhyang improves skin texture and complexes. Dhrad Yakrat. Dhrad Yakrat means provide physical strength, tone and stability. It causes rigidity. It causes rigidity in body. Sir Sravan Padesu. Sir means head, Sravan means ear, Padesu means feet. Tam Visheshena Silayet. Tam Visheshena Silayet. It should be practiced with special emphasis. So Abhyang especially done on Sir means head, Sravan means ear, Padesu means on the sole of feet. Okay. Visheshena means especially, Silayet means should be done. वर्जयो अभ्यंग कफग्रस्त संशुद्धि अजीर्णि भी। वर्जय अभ्यंग means वर्जय means contradicted. Abhyang means oil massage. Oil massage is contradicted to kafagrast, people who are suffering from kapha disorders.
Okay, those suffering from excess or aggravated cough disease. कृत संशुद्धि, those who have just undergone पंचकर्मा purification, जिन्होंने just purification therapy पंचकर्मा थेरेपी की, उनको अभ्यंग नहीं करना. जो कफग्रस्त है उनको अभ्यंग नहीं करना. अजीर्णी भी, those suffering from indigestion, they are avoided to अभ्यंग, उनको ऑयल मसाज नहीं करना चाहिए. This is the meaning of श्लोका. English meaning I have already tell you should see the हिंदी meaning, पढ़ लो बस हो जाएगा. Okay. Next shloka on Vyayama, means physical exercise. So first we will study in meaning of this shloka. Lightness of body, enhanced capacity to work, a highly stimulated digestive fire, depletion of excess body fat, and distinct compactness of the musculature are derived from physical exercise. Physical exercise से body में lightness आता है. Physical exercise bring lightness in body, enhance the capacity to work, काम करने की क्षमता बढ़ती है. Highly stimulated digestive fire, पाचन शक्ति बढ़ती है. ओके. Depletion of excess body fat, physical exercise से body fat कम होता है. Physical exercise help in loss of body fat. Distinct compactness of the musculature, body muscular compact हो जाती है. It must be strictly avoided by those suffering from वात और पित्त disease. So व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? जिनको वात और पित्त डिसऑर्डर्स होते हैं. व्यायाम इज फिजिकल एक्सरसाइज इज अवॉइडेड फॉर वात एंड पित्त रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर्स. चिल्ड्रन को भी नहीं करना चाहिए. एल्डरली पीपल आर आल्सो अवॉइडेड. इंडिविजुअल विद इंडाइजेशन, जिनको इंडाइजेशन है उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज आर अवॉइडेड टू वात पित्त डिजीज, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल एंड people with indigestion. Strong people who consume a rich, uncut diet should exercise up to half their capacity. Okay, strong people जो अच्छा खाना खा रहे हैं उनको अपने आधी कैपेसिटी के हिसाब से फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए. अर्ध शक्ति मीन्स people with अर्ध शक्ति should exercise daily during winter and spring. Okay, and perform it very mildly in other seasons. Afterward, a comforting full body massage should be done. और फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में हमको एक मसाज, फुल बॉडी मसाज करना चाहिए. चलो श्लोका. लाघवम कर्म सामर्थ्यम, तो अग्नि मेदस क्षय. लाघवम मीन्स लाइटनेस ऑफ बॉडी. कर्म सामर्थ्यम means capacity to perform work. Karma means work. Samarthyam means capacity. Dipto Agni means it stimulate. Dipto means stimulate. Agni means digestive fire. Medasa Chaya means fat. Chaya means destroy. So physical exercise, what physical exercise brings? Lagvam, lightness of body. Karma samarthyam, capacity to work. Dipto Agni, stimulation of digestive fire. Medasachaya means depletion of fat, destruction of fat. Vibhakt Ghan Gatratvam. Vibhakt means symmetrical development. Ghan means distinct. Gatratvam means musculature. And also physical exercise being symmetrical development and distinct musculature, compactness of body parts. Vibhakta ghan gatratvam. Vyayam upajayate are produced and obtained by the physical exercise. Vyayam means physical exercise. Upajayate means produced. So physical exercise produced laghavam karma samarthyam dipto agni medasya chaya vibhakta ghan gatratvam. Okay. These are the benefits of physical exercise. Vata Pitta Amayi. Here,
Vata Pitta Amai. Those suffering from Vata Pitta disease. Balu Vardho Ajirni. Balu Vardho Ajirni Cha. Balu means children. Vardho. Vardho means elderly people. Ajirni means indigestion. Balu Vardho Ajirni. Balu Vardho Ajirni. Tam Tyajet. Should avoid. Okay. Physical exercise are avoided by Vata Pitta related disorders people, children, elderly people and people with indigestion. Should avoid vyayam or physical exercise. Okay. Ardha Saktaya. Nisevyastu. To half one maximum capacity. Ardha Sakti means the capacity, half capacity of the body. Up to half capacity of body should be performed. Ardha Saktya Nisevyastu Bali bhi Snigdha Bhoji bhi. Bali bhi Snigdha Bhoji bhi by individuals who are strong and consume ungluttonous food. People with half body strength, okay, should perform physical exercise. Sheetkale Vasante cha, during the cold season and spring. Sheetkale means cold season. Vasante means in spring season. So, people with half body capacity and who eat oily food, snigdha food, oily food, and with power should do physical exercise in cold season and in spring season also. Okay. Mand ev tato anyatha. Mand mev tato anyatha. Mand ev tato anyatha means mild, moderately in other season. So in cold season and spring season, physical exercise is done. But in other season, the physical exercise should be slowly, like in summer. In summer, physical exercise should be done very less because of dehydration problem. Tam kritva anusukham deha mardayet cha samantata. Tam kritva anusukham, after doing it according to comfort level. Tam means that physical exercise. After doing that physical exercise, kritva means done. Anusukham. Anusukham means comfort level. After doing physical exercise, after comfort level, deha mardayet cha samantata. Deham means body. Mardayet means should be massaged. Samantata, all over the body gently. After physical exercise, body should be massaged properly. So this is the meaning of this sloka. This in the meaning of the sloka you should read. Okay. Next, Vyayama Ati Yoga, adverse effect of over exercise. So what are the adverse effect of over exercise? अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? तृष्णा क्षय प्रथम को रक्त पित्तम श्रम क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वर छर्दिश्च जायते. Excessive thirst, tissue depletion, severe breathlessness accompanied by darkness before the eyes, pratamaka, bleeding disorders, raktapita, acute physical fatigue, mental exhaustion without work, chronic cough, fever, vomiting are caused due to over exercise. ओवर एक्सरसाइज से क्या हो रहा है? प्यास लग रही है बहुत. एक्सेसिव थर्स्ट. टिश्यू डिप्लेशन, धातुओं का क्षय हो रहा है, टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो रही है.
धातुओं का क्षय हो रहा है। सीवियर ब्रीथलेसनेस, ओके, सांस फूलना, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। डार्कनेस बिफोर द आईज, आंखों के आगे अंधेरा छाना, प्रतमक। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रक्तपित्त। एक्यूट फिजिकल फैटिक, एकदम थकान आ रही है। मेंटल एग्जॉशन, ओके, और मानसिक थकाव भी आ रही है। मेंटल एग्जॉशन मीन्स मेंटल फैटिग। विदाउट वर्क, बिना किसी काम के। विदाउट एनी वर्क देयर इज फिजिकल फैटिग एंड मेंटल फैटिग ऑल्सो। क्रोनिक कफ, ओके, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, आर द इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज। तो तृष्णा, effect of overexercise. First, Trishna, excessive thirst. Next, Chaya, means tissue depletion, wasting of body mass. Okay, Dhatu, Chaya. Pratamako, third effect. Pratamako, severe breathlessness, सांस लेने में problem, a type of dyspnea associated with darkness before eyes. Raktapittam, fourth. Okay. Raktapittam, bleeding disorders, internal hemorrhage from body orifices. Sramaha means fatigue. Fifth is Srama means fatigue. Klamaha, sixth problem, Klamaha, mental exhaustion, tiredness without physical work. These are the results of Ati Vyayama due to over exercise. Over exercise. Next, Kaso means chronic cough. Excessive exercise causes chronic cough. Jwara, Jwar means fever. Hardi means vomiting. Jayate means causes of produced due to over exercise. Jwar, Chardi, Jayate. Okay, read these extra things in Hindi meaning. Sahasa Varjana, evils of excessive strain and over exertion. Sahasa Varjana means something done excessive. जरूरत से ज्यादा कुछ कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? सहस वर्जन। सो क्या इस श्लोका कह रहा है? व्हाट द श्लोका टेल्स दैट इंडल्जिंग इन एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, अगर हम कुछ ज्यादा ही फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज, कीपिंग अवेक एट लेट नाइट, अगर हम रात को ज्यादा जग रहे हैं, वॉकिंग इमेज डिस्टेंस, हम बहुत ज्यादा ही चल रहे हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, एक्सेसिव लाफिंग, हम बहुत ज्यादा ही हंस रहे हैं, टॉकिंग लाउडली, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, स्पीकिंग टू मच, all these constitute rest over excession. All these constitute sahasa. A person who restlessly forces their body into these activities perishes utterly. अगर कोई person ये activities बहुत ज्यादा ही कर रहा है तो वो he is going to be die in the exact same manner as a wild elephant is destroyed after trying to drag a powerful lion. Here Vagbhatta beautifully correlate elephant who is trying to drag a powerful lion. So he is correlating this portion with over physical exercise and that things that we are going to do extra. Okay, so if an elephant is dragging a powerful lion, then this elephant is going to die. A wild animal destroyed after trying to drag a powerful lion. Like these, if we are going to do excessive physical exercise and waking at late night and trying to travel more distances and all these things, then the man is going to die. See, Vyayam means physical exercise. Jagar means
keeping awake at night. Adva, walking long distances. Adva, walking long distances. Stri, here stri is excessive sexual intercourse. And hasya means laughing, excessive laughing. Bhasya adi means speaking excessively. Sahasam, over excessive, okay, more than physical body capacity. Gaj Singh Eve, like a wild elephant or powerful lion. Akarsan Bhajan, engaging, pulling, dragging. Akarsan Bhajan means dragging that powerful lion by a elephant. Ati Vinishiti is completely destroyed. So जो भी ये चीजें एक्स्ट्रा कर रहा है वो मर जाएगा. And the people who are doing extra व्यायाम, extra awaking at night and walking long distances and doing sexual activities more and laughing more, speaking more and doing things extra than body capacity is going to die like a elephant who is killed by dragging a powerful lion. Next, Udvartana, herbal powder massage, very important. Udvartana. Okay. So, Udvartanam, Kafaharam, Medasa, Pravilayanam, Isthirikaranam, Anganam, Tvak Prasadikaram Param. So, what the meaning of this sloka? Udvartana means massage the body with dry herbal powder. Udvartana means a powdered massage. Mitigates aggravated kapha dosa. So, Udvartana decreases aggravated kapha. Important thing, Udvartana decreases aggravated kapha. Liquefies and melts away excessive fat. Udvartana causes decrease of fat. Brings firmness and structural compactness to the limbs. It brings firmness and structural compactness to the limb. तो वो बॉडी को स्थिरता लेके दा रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है. ओके, उद्वर्तन क्या कर रहा है? बॉडी में मजबूती ला रहा है, बॉडी में स्थिरता ला रहा है. एंड एक्सीलेंटली क्लीनेस एंड ब्यूटिफाइज द स्किन. और वो बॉडी को क्लीन कर रहा है, चमकदार बना रहा है, स्वच्छ कर रहा है. ओके, और स्किन में ब्राइटनेस आ रहा है, चमक ला रहा है हमारे स्किन के टेक्सचर के अंदर. तो हम श्लोका देखते हैं. उद्वर्तनम. Udvartanam means massaging the body with the herbal powders. Kafaharam. So Udvartana is Kafahara, destroy Kapha dosa. Very important. Udvartana destroy Kapha dosa. Kafahara. Hara means destroy. Medasa means body fat. Udvartana also destroy body fat. Okay. Pravilayanam. Pravilayanam means liquefying, dissolving. Who is dissolving here? Body fat, medas. Sthirikaranam. Udvartana causes sthirikaranam, means providing firmness, compactness and core stability in body. Angana means body organs. Udvartana provide sthirikaran to body organs. Tvak prasadikaram param. Tvak means skin. Prasad Karam Param. Prasadikaram means illuminating. Bring brightness in skin. Okay. So thank you. Read the Hindi meaning. Okay. Bye.